these players. And in fact, the top four order, top four batters of Shri Sports Dilbag. But there was a rescue from number 5, number 6 for them later on in the previous game. This is nicely hit up and over, goes, clears the field for 6 runs. Very well played with a straight bat right in the slot, but he very well here with the 6. And good to see the left-hander playing straight, not playing across. Only the 2 fielders allowed outside in the power play overs, the mandatory restrictions. Both have been kept on the leg side. All the fielders are inside 30 yard. Shubham starting the proceedings. They bowled very well in the first few overs, but the 5th, 6th and 7th over went against them. This is going to be a 6-over game. This time trying to pull away, Sapresh Mulvi, chance of a run out, but the batsman makes it well at the striking end. Take a single inside the 30 yard. And the batsmen are going to swing hard at the balls, especially in these fielding restrictions. The score moves on to 8 at the moment, with just 2 balls have been bowled. Very good looking side, a very compact side, Shri Sports Dilbag, with Darshan Bandekar missing his opportunity, not contributing with the bat. Still they posted a score of 90 runs, which itself speaks volume about the strength of the batting of this team. Very well driven inside out, clearing the front leg and clearing the boundary with his. So 1-6 and a boundary, first from the left hander, now from the right hander. So Ponda versus Dilbag is the battle. So both the batters have got themselves up to a mark. One with a 6, one with the boundary. Pretty good total at the moment. Good start. They are going hard at the ball. They are going hard at the ball and stopped by the fielder just outside that 30 yard. Trying to play off the back foot. Trying to play with a punch towards the wide of mid of vision. Fielder gets a single. 13 on the board. So left and right combination is the best combination if any team has pretty good batters at the top. This is a full toss ball. Batsman was asking for a wide. He shuffled across on the offside. He's looking surprised at the moment, and he feels that it was very, very close to the leg stump. There is a second guideline, a small guideline, especially down the leg side, which is specially kept for the umpires. He is selling is not a wide, so that's a dot ball going against the batter. Oh, that's not the ball. That's not the ball that you like to bowl here. Short, outside your stump, way outside, very well left here. Not trying to play around with that. Length has been missed. Length has been missed by Shubham in this over so far. Apart from one ball, rest of the balls have been fuller or rather too short. This once again, this is in the air and once again dropped here. Nana Kurpaskar is dropping, and lucky there. He was lucky over there. This is the second catch that has been dropped by Nana Kurpaskar. Normally he is a very good fielder, but the luck going in favor of Nana and Ravalnath Nageshi, and that's the wicket in the form of a run out. Yeah, calling was not there, and that marks the end of over number 1 is 14 for the loss of 1.
So here is so in comes Sagar, who bowled a very good spell in the previous game. Picked up 3 crucial wickets, in fact 4 crucial wickets I feel in his bowling order, and that broke the backbone of the opposite team. But right now he's up against one of the superstars, Darshan Banekar, who is struggling with his footwork. You can see he's nimbling at the moment. Maybe some sort of not the injury, maybe a cramp. So let's see what goes in the next over. He's bowling against the left hander. So Vicky on the crease. That should be taken. That should be taken. Pretty good start here. Bowling from round the wicket, angling the ball inside, getting the lower part of the bat and chipping in towards the short extra cover region. Catch taken. Back-to-back wickets here for the team. And Sagar starts off with the wicket. It's 14 for 1. So 2 wickets is 14 for 2, and good start. Whenever you get a wicket, it's always a positive start. And Sagar has been perfect in his length, perfect in his approach, perfect in his line as well. He knows I have to do a simple job, whether I'm bowling to Darshan, whether I'm bowling to Vicky, or whether I'm bowling someone else. When I have a bowler bowls a good line or length, it's always a trouble for the batters. Once again, this is in the air, but played off very well off the back foot punch, back foot drive in the covers, getting a boundary here. Wonderful shot to get yourself off the mark. Very clean, very good. That's a quality shot. In fact, whenever you play off the back foot, it's not easy. And Mahendra starting with the boundary once again. Good line, good length. You can see they are not still picking him from the hands. He is the one who is not bowling with an extra pace, but when the ball is delivered, I think there is a little bit of variations, little bit of leg cut, and he's bowling in the right areas, not in the slot, not in the radar to slog on the leg side. This time he would away, just away from the fielder. The fielder coming all the way from mid-wicket region towards the backward square leg region. Sapresh Mulvi felt that there was a chance there, but away from him. Slightly uppish, but well placed here by the batter, getting 2 runs. In tennis ball cricket, as a batter, you are going to take the chances. You are going to take the aerial way. You want as many runs as possible, and will be taking the risk as well. If the ball is on the wickets, try to play on the leg side with the swing of the bat. Score moves on to 20 for the loss of 2. That's in the air. That's in the air. Should be a chance there. Fielder coming underneath and goes over his head. I think it's the wind taken that ball away from the fielder over the boundary. And it's a windy 6 coming from the bat of right-hander Mahendra.
Suchita officiating. Splendid work. They are going all across Goa because they have certainly been at the top of the game as far as the rules and regulations, and they are taking the rules absolutely perfectly. They know exactly what is the game for them, and they are taking the right decisions at the right time. And that's why not only here, from north to south, everywhere they are popular. Babulal Patan comes onto the wicket, and that could have been one of the most spectacular catches if it was taken. But just popping out of the hands, but take nothing away. Brilliant effort from the fielder coming all the way from wide, long on towards behind the bowler, almost to close to the side screen. Brilliant effort. This catch is either struck to your hands or not. Babulal Patan welcomed with almost, so you can say, a big shot. Could have taken a wicket as well. This time outside edge and catch taken. You can see the pace of the bowler, that leading edge going almost towards the short tournament region, and Babulal Patan strikes. Third wicket, and Mahin, looking dangerous, goes back to the pavilion. So in comes Watson. Watson, left-hander, has been brought up here. Godwin has been kept a little down. They need him maybe in the last 2-3 overs. Babulal Patan picking up wicket of the second ball. Darshan has been kept off strike for quite some time now. Oh, he lost the grip of the ball, and the ball just landed somewhere close. Batter was looking for the opportunity for going for the six, but ball didn't come on the wicket. So that ball, says the umpire. Sometimes, yeah, little funny moments here in the game of cricket. We witnessed it many a times. Lovely slow ball, dipped in at the last moment. He's a cunning cricketer. Whenever a player plays in leather ball cricket, he must have played some close matches, and that is exactly where 20 overs games brings the best out of you. And he knows that batters are always trying to go after you in tennis ball cricket, and at the moment doing a good job for the team. Right in the block hole. Fuller is the best one. Fuller is the best. Only thing you have to avoid the slot, that is he's avoiding at the moment. And don't ever bowl to in the slot to this man, the giant of a man, Darshan Bandekar. Missed opportunity in the first game, but still Shri Sports Deva managed to score a good total of 90 runs. But everyone is waiting anxiously to see some sixes from this big man, superstar from Malvan, Darshan Bandekar. That's the one. Look at the bat lift and look at the result here. Just a half punch, and the ball goes over the mid-wicket region for a power 6. .34 so far from Shri Sports Devag. Wonderful ball, good pace, right in the block hole, and gets a quick single here at the non-striker's end. And struggling with his running at the moment, Darshan Bandekar, but hope that everything is fine with his leg. 3 overs gone, pretty good over here from Babulal Patan, picking up a wicket as well as economical, and it's 35 for the loss of 3. Shri Sports Devag.
not only from Shri Sports Devbag but of the day. That's a clipped away. There is no one there. There is no one there. It's an open land, open space, and an open area for Darshan to heave and get a 6. Easy to bowl against this giant batter Sagar. Once again, chance. No, it went straight in between the fielder. It was in the air for a while, but also went quickly and very well placed by Darshan. This is not the best of the starts for bowler. Certainly one of the best for Darshan Bandekar, bowling from round the wicket, changing ends here. So he's just looking for a wicket. The bowler, this should be a chance. No, once again, just clearing that mid-on region fielder. Wonderful punch and just above his head for 4 runs. A 6, then a boundary for Darshan. Definitely having a word there, and they have got 3 men, and he's telling that he cannot move over there. Once you are so straight, there should not be any movement from the fielder. If there is any movement, an umpire will take the right decision. Here comes the next ball. Lovely one, but once again, Darshan is showing the pink ball, the Darshan of the boundaries in the leg side. Explosion from this big man, and entertainment for all the cricket lovers. Once again, the change of hands, bowling from over the wicket. No, this could have gone for 6 runs down the leg side. Can't bowl over there. I can understand when the batter like Darshan Bandekar is going berserk on this ground. He's getting the boundaries in 6 feet as he is, in spite of bowling well, Sagar. So certainly it puts your blank idea in your mind where to bowl the next one. This time that's a ball, that's a good ball. Anything that is a dot ball against Darshan Bandekar, whether it's a full toss or whether it's a york or a back of length, is going to be a good ball for any of the bowlers around. 54 at the moment. We are into the 4th over. The pink ball over, the Candid Voice over. Once again, this is good length here. Very good bowling here. Good bowling just outside, back of length, and the only shot that he's trying is off the back foot punch in the covers, which has been missed and goes straight into the hands of the fielder. So 2 dot balls to finish over number 4. 54 for the loss of 3. Shri Sports Devbag. So in comes Sapresh Movie. Against the left-hander, Darshan Bandekar is playing on 26 of just 9 balls with 2 sixes and 3 boundaries, taking the advantage of the fielding restrictions in the pink ball over. This was right in the slot. He's bowling in the slot, and the ball has been hit away in the neighboring plot. Wonderful pick-up shot on the leg side.
Sapresh had not the best of the time in bowling department. He's a fine bowler in leather ball cricket, but this is something different for him. He's bowling the 5th over when the batters have got a license to go for the kill. This time in the air, this is a good ball. Once again, Nana Gurpaskar, he takes it in the 3rd attempt. Finally, he takes the 3rd one. He had dropped 2 earlier in the day, but he takes the 3rd one. Lucky in the 3rd time, and the left-hander departs. When the team was struggling with score. At the moment, they are posted pretty well on 60 for the loss of 4 wickets. In comes Godwin. This time in the air should be a chance. Oh, just lucky there. Just lucky Godwin. Once again, he wanted to swing on the leg side, getting a leading edge, but keeper can't reach to the ball. And it will be Darshan Bandekar. Darshan Bandekar looking dangerous, and he's always explosive. He's always attacking. He always positive. He knows that he can clear any boundaries with his up against Sapresh. Look at that! Look at that! That was like a slap down the ground. And this is not the best ball that Sapresh can bowl. It is right in the area, right in the hitting zone of this big man. So 2 balls still left. And Darshan looking up dangerous at the moment when he's timing the ball, hitting the ball crisply. Look at that flick. Just a mere flick, and the ball has almost gone 20 meters away from the boundary. End, but I think he has done it to many of the bowlers around, getting 6 hit. He is many a times even the 5-6s. So we'll be looking to get one more here. That's a wide ball just outside, keeping it away from him, but conceding a wide as well. So already looking a big total. 74 and with 1 over to go, and Darshan on the crease, well set, looking for a 50. He can certainly get one. This is in the air, but away from the fielder. One bounce, clearing the fielder, timing it well, placing it well, gets the boundary, and an expensive over coming from Sapresh Murli to an end. End of over number 5 is 78 for the loss of 4 wickets. Playing on
42 of just 12 balls and 6 overs, 78. In fact, 5 overs 78, and he will be. This will be the 6th over, which will be bowled by Nana Kurpaskar. Well, it was a different bowler in the previous game. Nana is a fantastic left-arm orthodox bowler, picks up many wickets in leather ball game, but here he is going to be locking his arms against two players. One is a power striker, and the second is with high on confidence Godwin with the player of the match award in the previous game. So a good start here by Nana Kurpaskar, Sachin Kurpaskar. A good opening batter as well as handy with the ball and left armers. So he's going to cut the ball away from the right-hander, bowling those leg spinners for the right-handers. Just a single, that's the best thing that Godwin can do. Get you strike to Darshan Bandekar. Oh, switch it! Oh, the extra cover for 6 runs. Well, going with the swing and going with the spin and going out of the ground. Has exploded at Kenny Boys Morjim. He's playing on 48, 2 short of 50. He gets the 50. He gets the 50, and the first man at Kenny Boys Morjim Champs 2024 to get to a wonderful powering 50 for his team. Shree Sports Devbag is moved on to 54, and we have been really enthralled as an audience with this magnificent hitting display. Sixes of 3 balls, hat-trick, then there will be cash prize of 1,000 rupees. Cash flowing, and this is a cash flowing tournament. It's a big tournament, entertainment for everyone. Here comes the 3rd ball. Let's see. It's a wide ball. It's a wide ball. So the chance of a hat-trick is still there. No, it's not there. It is still there. This time Marcel flat bed, and it has been dropped down the ground. Everyone was waiting actually that 1,000 will go in the kitty and for a hat-trick of 6s, but the catch went straight flat in the hands of the mid-on. He drops it. Darshan doesn't go for a single, keeps the strike. This time, once again, he missing the timing, looping for a second. Should be a run-out chance, and should be a run-out at the non-strikers. And Nana, very good with reflexes, and a wicket of Godwin through run-out at the non-strikers' end. And Darshan will keep the strike of the last ball. So Kiran Dhuri, but he has to do the job of running if Darshan Bandekar doesn't get a boundary or a 6 here. It's going to be the last ball. And Darshan with a magnificent 50 will look to finish on a high note. And look to finish with a big one here. Nana bowling from around the wicket to Darshan Bandekar. This is in the air. There is a fielder there. Will he take it second time? This time he takes it, and Darshan gets out of the last ball of the innings, and they posted a very, very good total of 93 runs after the completion of 6 overs. Shree Sports Devbag, courtesy of Darshan Bandekar's 50, and 94 runs required for Ravalnath Nageshi to win and enter into the quarterfinals.
फॉलोवर्स भरपूर आसात लोक लायव्ह पळयताय बी गोवा टेनिस टेनिस क्रिकेटीचेर तशेंच हांगा गरमी आशिल्ल्या कारणान तुमकां लिंबू सरबत लिंबू पाणी तसोच काळंगाचो आस्वाद आसा जर कोणाक घेवपाक जाय जाल्यार आमच्या कमेंट्री बॉक्साच्या रायट सायडीन शॉप आसा थंय तुमी डेफिनेटली घेवपाक शकता आनी मातशें गरम जाल्यार तें मातशें थंडी जावपाक शकता सो तुमी डेफिनेटली ताजो आस्वाद घेवचो. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद. तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं कमेंट्री बॉक्स के बगल में. नींबू शरबत नींबू सोडा कलिंगन ये उपलब्ध है. और रुक करते हैं मैदान पर. ओपनिंग जोड़ी जा चुके हैं मुकेश और मुकेश के साथ अक्षय नाइक जिन्होंने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी. और पहली गेंद इस बार स्लॉक से मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद पहले बाउंस के बाद निकली 4 रन के लिए. अच्छी शुरुआत मैदान पर चौके के साथ. डीजे लेकिन देखने का बल्लेबाजी किस तरह से होती है. छोटी गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. थोड़ा सा इशारा भी हो चुका है अंपायर का इस शॉर्ट पिच बाउंसर के लिए. दर्शन बांदेकर दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट सामने से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. 6 ओवर का मैच है दोनों के बीच में. इस बार फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट शॉर्ट आर्म पोल का मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा दूर थी गेंद फील्डर से और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. डीजे नेक्स्ट मैच आरबी आणि आरोंदा काय नाव दिलं सुपर 6 आरोंदा बरोबर. शेखर दो चौके स्ट्राइक पर लगाते हुए बल्लेबाज मुकेश सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर. आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए लेकिन गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद गुडले स्पॉट पर ऊपर उठती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. 6 ओवर का मैच है दोनों के बीच में आने वाला मैच होगा जो सुपर 6 कौटनी आरोंदा और उन्हीं के साथ आरबी 11 कोरगा. बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार. एक लेफ्ट शॉट डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई. सिक्सर 6 रन के लिए. एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले में रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम की. डीजे शॉट 15-16 के साथ रन बनाने पड़ेंगे और एक अच्छी शुरुआत पावर प्ले में. ऑन साइड पर बहुत ही तगड़ा शॉट डीप मिड विकेट पर. कमाल की फील्डिंग बहुत ही शानदार फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर. शुरू में ऐसा लगा गेंद 6 रन के लिए जा रही है लेकिन वहीं पर गेंद को रोका. अंपायर का इशारा आ चुका है. क्या यह फील्डिंग सेफ है या गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल रही थी देखा जा रहा है बिल्कुल जो कि टेनिस क्रिकेट .in से सेफ है. बहुत अच्छी फील्डिंग. सिर्फ एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में. तो बहुत बेहतरीन फील्डिंग. पहला ओवर पावर प्ले का समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 चौके एक छक्का लगाते हुए बल्लेबाज मुकेश और टीम का टोटल स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान से. आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर रहे हैं. आइए प्लीज सुपर 6 कौटनी आरोंदा क्रिकेट टीम और आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम. चलिए दोनों टीम कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए. टीम लिस्ट आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम. आइए प्लीज कैप्टन आपकी टीम लिस्ट
और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से बॉलिंग बार पर विकी फर्नांडिस, सामने स्ट्राइक पर एक बार फिर से मुकेश और मुकेश का साथ देते हुए अक्षय नाइक। ये जोड़ी रवलनाथ नागेशी, एक अच्छी शुरुआत। सफर लंबा जरूर है लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो शुरुआत दिला दी पहले ओवर में बिना किसी नुकसान से 15 रनों की। अच्छी गेंद इस बार सामने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर महेश बाइडकर का आगमन हो चुका है। महेश, आपका स्वागत है। आरवी 11 क्रिकेट टीम के कप्तान आ चुके और बिल्कुल हाल ही में शादी हो चुकी है, तो शादी मुबारक हो महेश आपको। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद कवर पर फील्डर और इसी के साथ पहला धक्का लगता हुआ रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम को डी से। फ्लाइटेड गेंद थी, लेग ब्रेक गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी और पहला विकेट चला गया। विकी सफलता दिलाते हुए अपने टीम को स्कोर 15, एक विकेट पर। और न्यू बैटर मैदान पर शुभम फड़ते, नए बल्लेबाज मैदान पर शुभम फड़ते। ये तेज गेंद करने की कोशिश, थोड़ा सा लाइन पर भटके, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 16 रनों पर। कप्तान आ चुके आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के अपने टीम लिस्ट के साथ। तो आइए प्लीज सुपर 6 कौटनी आरोंदा क्रिकेट टीम। और इस बार बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे वहीं पर मुकेश अपना विकेट खो बैठे। ओवर पिच गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और इसी बीच अगली गेंद, अल्टी पल्टी की कोशिश। इस बार लेग स्टंप्स शफल होकर खेलना चाहते थे, टिप्पा लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट होकर और बाहर की तरफ निकले। और आजकल बिल्कुल करीबी के साथ देखा जा रहा है, जो कि लाइन को देखा जाता है, बल्लेबाज कहां पर आ चुका है, कहां पर खेल रहा है, किस तरह से खेल रहा है, ये भी देखा जाता है आजकल। और उसलिए अंपायर ने बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित किया और 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम फुल टॉस, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चलेगी 6 और 6 रन के लिए। दूसरे ओवर का और सही जवाब दे रही है रवलनाथ नागेशी क्रिकेट टीम। 33 टोटल, 33 रन, 1 विकेट पर।
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर, लगभग मिड विकेट पर एक बार फिर से गेंद चले गए और एक चौका लगता हुआ एक बड़े टोटल का सामना मैदान पर 54 रनों का, और उस 54 रनों का जवाब देती हुई रविन्द्रनाथ नागेशी क्रिकेट टीम ये पावर प्ले में बहुत ही दमदार बल्लेबाजी। स्कोर हो चुका है टोटल 37, लॉस ऑफ 1 विकेट, 37 रन 1 विकेट पर। देकर के ओवर पर और सामने 2 छक्के 2 चौके लगाते हुए शुभम पड़ते और उनका साथ देते हुए अक्षय नाइक, ये जोड़ी मैदान पर 2 ओवर समाप्त हुए और स्कोर 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। मिडऑन पर फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग और उसी का फायदा उठाते हुए एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। और पिच गेंद एक लेफ्ट शॉट गैप में मिड विकेट बाउंड्री पर स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बाउंड्री का 6 ना देखा जा रहा है, बिल्कुल टेक्निकल मदद ली चुकी है tenniscricket.in से और देखा जाएगा। बाउंड्री है, 4 रन मिलेंगे स्कोर के खाते में, तो अंपायर का इशारा बिल्कुल सही था, 4 रन जुड़ गए चौके के साथ, स्कोर पहुंचा 42, 42 रनों पर। ओ ये तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, लोअर फुल टॉस, अपने आप पर थोड़ा सा नाखुश हो गए, मालूम था इस गेंद पर एक शॉट होना चाहिए था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। तीसरा ओवर जारी है, आने वाले 3 ओवर का खेल बाकी है, चौथा ओवर होगा जो पिंक कलर की गेंद के साथ, और टॉस हो चुका है और टॉस जीत चुके हैं RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। और एक बार गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। की गेंद थी, टोटल स्कोर हो चुका है 48, 48 रन। ओह बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, हवाई फायर, और इसी के साथ रविन्द्रनाथ नागेशी क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे होते हुए टोटल 54 डीजे। चालीस रन चाहिए, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और चौथा ओवर होगा वो होगा पिंक कलर की गेंद के साथ ओवर होगा। अगले मैच का टॉस हो चुका है,
टॉस जीतकर RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी को मौका दिया है। सुपर 6 कौटनी अरुंदा क्रिकेट टीम। इसी बीच देखना होगा ये आने वाला ओवर किस तरह से होता है। जो खिंडीर बॉयज बोर्जिम चैंप्स ओवर 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर बाकी। मैच को जीतने के लिए 40 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। क्या होता है इस मैच में, कौन जीतता है, कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर समीर पांड्रे के साथ। तीन षटकांमध्ये पाऊस तब्बल 54 धावांचा आणि उर्वरित 3 षटकांमध्ये म्हणजे 18 चेंडूंवर अवघ्या 40 धावांची आवश्यकता। महत्वपूर्ण षटक म्हणजे पिंक बॉल षटक। या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय, तो बहुधा मितेश बांदेकर, तर समोर आहे फलंदाज स्ट्राईकला तो अक्षय। फुलरलेनचा चेंडू, सुरेख असा चेंडू, हलके टोलवण्याचा प्रयत्न, नाममात्र एकेरी धाव। या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 55 धावांवर। सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये आक्रमक अशी फलंदाजी झाली, खास करून फलंदाज शुभम याने आपल्या आक्रमक फटकेबाजीचं ज्वलंत उदाहरण पेश करताना चतुरसूत्र खेळीनं या ठिकाणी श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाच्या हरेक गोलंदाजांचा खरपूस समाचार घेतला। परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज, ओव्हरपिच पदाचा चेंडू, देखण्या असा फटका, चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे षटकारांसाठी। शुभम पडते नावाचं वादळ हे अक्षरशः या मोरजिमच्या मैदानावर घुंगावताना दिसतंय व खेंडी बॉयज मोरजिम चॅम्पियन्स 2024च्या स्पर्धेमध्ये या वादळानं पुरतं नतमस्तक करून ठेवलंय। ते अर्थातच या ठिकाणी श्री स्पोर्ट्स देवबाग संघाच्या गोलंदाजांना तब्बल 61 धावा धावफलकावर 94 धावांचा पाठलाग करताना। अवघे 10 चेंडू खेळलेत, तब्बल 42 धावा कुठल्यात व एका प्रकारे आव्हानातील हवा ही काढून घेतली शुभम पडते याने। तो शुभम पडते खेळण्यासाठी गोलंदाजाचा सज्ज होतोय। हा कुर्तापाचा चेंडू, शॉर्ट आर्म पुल पदाचा फटका, चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी। 11 चेंडू, तब्बल 48 धावा असं फलंदाजीचं पृथक्करण शुभमचं। 1 मॅन आर्मीचं प्रदर्शन घडविताना षटकारांची आतषबाजी या ठिकाणी घडवतोय तो फलंदाज शुभम आणि पूर्णतः नामोहरम करतोय श्री स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ देवबागच्या गोलंदाजांना, ज्या 6 धावांनी तब्बल 67 धावा 94 धावांचा पाठलाग करताना। सलग 2 चेंडूंवर 2 षटकार तोलवले गेलेत। जर या चेंडूवर षटकार तोलविला गेला तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक षटकारांच्या हॅट्रिकसाठी या स्पर्धेदरम्यान पुरस्कृत करण्यात आहे। पाहायचं आहे फलंदाज ती संधी प्राप्त करतोय की नाही ते। ओव्हरपिच चेंडू, मोठा फटका, चेंडू निश्चितपणे मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे जातोय तो 6 धावांसाठी। षटकारांना वैयक्तिक अर्धशतक धावफलकावर शुभम पडते झळकवतोय व या षटकारांनिशी या ठिकाणी तो तब्बल 1000 रुपयांचं पारितोषिकही या ठिकाणी पटकावतोय। निरव शांतता पसरते ती श्री स्पोर्ट्स देवबाग संघाच्या गोटात, कोणीही गोलंदाज सोपवू शकत नाही ती तिखट अशी फलंदाजी अर्थातच शुभम पडतेची। अर्धशतकाला गवसणी घालतोय तो शुभम पडते, सलग 3 चेंडूंवर 3 खणखणी षटकार तोलवत व या 6 धावांनी धावफलक वाढतोय तो 73 धावांवर। अवघं 4थं षटक प्रगतीपथावर, 73 धावा धावफलकावर। ओव्हरपिच पदाचा चेंडू, फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय। यावेळी मात्र शॉर्ट लॉंग लेगचा क्षेत्ररक्षक जेल टिपतोय, मात्र थोडासा उशीर झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण बाद होण्यापूर्वी शुभम पडतेनं सर्व काही ठीकठाक, सर्व काही आलबेल आपल्या संघासाठी केले। 7 षटकार व 3 चौकार यांच्या मदतीनं त्यानं तोडफोड फटकेबाजी करत वैयक्तिक अर्धशतक तर धावफलकावर झळकवलंय। अवघ्या 13 चेंडूंचा सामना करत तब्बल 54 धावांची तोडफोड खेळी शुभम पडते याची समाप्त होते दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात व त्या तोडफोड खेळीला टाळ्यांच्या गजरात ही मानवंदना दिली जाते। पाठलाग होतोय तो 94 धावांचा। 94 धावांचा पाठलाग करताना 23 धावा धावफलकावर। षटक क्रमांक 4 हे प्रगतीपथावर। नवीन फलंदाज शुभम गावडे याची वर्णी मैदानावर लागते। शुभम गावडेला डाव सावरावा लागेल। जे कार्य शुभम पडतेने अधुरं ठेवलं ते कार्य पूर्णत्वास नेण्यासाठी शेवटपर्यंत लढावं लागेल ते अर्थातच या ठिकाणी शुभम गावडेला। मात्र दुसऱ्या बाजूने सफलता प्राप्त करणारा मितेश हा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर। मोठा फटका तोलवायचा होता, विथ अलाउंग द कार्पेट जमिनीलगत फटका निघतोय, चेंडूचा प्रवास होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू अडवून या ठिकाणी
स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. एकेरी धावेने षटक क्रमांक 4 हे समाप्त होतंय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या धावफलकावर ही 74. आता 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. व या 12 चेंडूंवर या ठिकाणी आवश्यकता तब्बल 20 धावांची विजयासाठी. ही अर्थातच या ठिकाणी रवळनाथ नागेशी क्रिकेट संघाला 12 चेंडू 20 धावा 8 गडी तंबूमध्ये अजूनही शेष. या मैदानावर धावांचा विचार केल्यास फलंदाजांना पोषक असं मैदान ठरतंय. कालच्या दिवशी तब्बल 114 धावांचा पाठलाग झाला होता. आज सकाळच्या सत्रात 93 धावांचाही पाठलाग झाला होता. एक मात्र सामना यापूर्वीचा त्याचा अपवाद वगळता सर्व सामने हे मोठ्या धावसंख्येचे आणि त्याच मोठ्या धावसंख्येच्या पाठलागामध्ये भर घालणारा हा एक सामना. 12 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू 20 धावा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज नितीन बांदेकर सज्ज होतोय आपली बोट चेंडूवर नाचविण्यासाठी. व ते निश्चितपणे त्याच्या समोर फलंदाज स्ट्राईकला असेल तो अर्थातच शुभम गावडे वैयक्तिक एकेरी धावीवर. तर अक्षय त्याला साथ देतोय नॉन स्ट्राईक एंडला तो 2 धावांची. 12 चेंडू 20 धावा. नितीन बांदेकर गोलंदाजी मार्कवर आमच्या विरुद्ध दिशेनं सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू हलके स्टोलवीला जातोय तो शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षण होतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. च्या एकेरी धावेने धावफलक वाढतोय तो 75 धावांवर. म्हणजे आता 19 धावांची गरज येऊन ठेपते व 11 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. 11 चेंडू 19 धावा. स्ट्राईकला अक्षय सामना करेल नितीन बांदेकर याच्या गोलंदाजीचा. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलवला तो चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेटच्या दिशेनं 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. केवळ एकेरी धावीवर समाधान हे मानावं लागेल. बालकीच्या गोलंदाजांचा विचार केल्यास या ठिकाणी काहीशे दिलासा देणारे 2 चेंडू सुरुवातीचे फेकतोय तो गोलंदाज नितीन. 2 चेंडूंवर केवळ तो 2 धावा खर्च करतोय. याचाच अर्थ 10 चेंडूंचा खेळ बाकी व तब्बल 18 धावांची आवश्यकता. परत एकदा एक मोठा फटका चेंडूचा प्रभास स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. डीप स्क्वेअर लेगला बहारदार क्षेत्ररक्षण होतंय. वाकाडण्याजोगी फेक यष्टीरक्षक दर्शन बांदेकरच्या दिशेनं होते. नाममात्र एकेरी धावीवर अक्षयला समाधान हे मानावं लागतंय. या षटकामध्ये सनसनाटी ही निश्चितपणे निर्माण झाली आहे. जे 3 चेंडू फेकले गेले त्याच पद्धतीचे चेंडू आवश्यक असतील श्री स्पोर्ट्स देवबाग संघाला तर दुसऱ्या बाजूने एखादा मोठा फटका नागेशी संघाला. आकृतापाचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा बहारदार फटका व ज्या फटक्याची आवश्यकता नागेशी संघाला आहे असं भाकीत वर्तवलं होतं त्या भाकित्यावर सतत उतरवणारा फटका रिव्हर्स स्वीपचा फटका स्विच हिटचा फटका हा फलंदाज अक्षय याच्या माध्यमातून निघतोय. ज्या 6 धावाने आता धावफलक वाढतोय. धाव तो निश्चितपणे तो 83 धावांवर. आता 11 धावांची गरज येऊन ठेपते व 8 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. एक मोठा फटका सर्व काही ठीकठाक सर्व काही आलबेल करतोय तो अर्थातच नागेशी क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं. 8 चेंडू 11 धावा. खेंडीर बॉयज बोर्जिम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2024 स्पॉन्सर्ड बाय मंदार मोहन भोके सर. परत एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास होतोय तो शॉर्ट दरम्यानला चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. 7 चेंडू आवश्यकता 11 धावांची. आपल्या पहिल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी गोलंदाज नितीन बांदेकर आमच्या विरुद्ध दिशेने सज्ज होतोय. 7 चेंडू 11 धावा. हा चेंडू महत्वपूर्ण ठरेल यात कोणतीही शंका नाही. या चेंडूवर फलंदाजला बाद करण्यात यशस्वीता प्राप्त झाली तर निश्चितपणे या सामन्यात अजूनही रोमांचक अवस्था प्राप्त होईल. फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र ताकद आजमावली जाते. डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी टोलावला जातोय आणि या षटकाराने आता केवळ 3 धावांची गरज येऊन ठेपते. 6 चेंडू आता 5 धावांची गरज येऊन ठेपते व 6 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. सुरुवातीच्या 5 षटकांमध्ये या ठिकाणी तब्बल 89 धावांचा पाऊस पाडला जातोय. 89 धावांचा रतीब घातला जातोय आणि हा डाव सुरू होण्यापूर्वी कुणा क्रिकेट रसिकांना अपेक्षा ठेवली नव्हती की एवढ्या लवकर सामन्यामध्ये रंगत आणतील नागेशी क्रिकेट संघाचे फलंदाज. मात्र दारोमदार शुभम पडते हा फलंदाज आपल्या खांदी घेत अक्षरशः 4 बाजूनं तब्बल 7 खणखणी षटकार तुलवून या सामन्यामध्ये आपल्या संघाला मजबूत अशी अवस्था प्रदान करून देतोय. आता 6 चेंडू नाममात्र 5 धावांची आवश्यकता. शेवटचं निर्णायक षटक फेकण्यासाठी पाहायचं आहे कोण गोलंदाज सज्ज होतोय.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज किरण सज्ज. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. स्ट्राईकला असेल तो फलंदाज शुभम गावडे, तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज हा अक्षय. सहा चेंडू 5 धावा. पहिला चेंडू ओव्हरपिच पद्धतीचा फटका टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो अर्थातच या ठिकाणी मिड ऑफ क्षेत्रात एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. क्षेत्ररक्षक होऊन चेंडूची परती होते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेसाठी फलंदाज अडचणीत आला की नाही यावर खातरजमा करण्यासाठी, यावर स्पष्टोक्ती करण्यासाठी तिसऱ्या पंचांची मदत ही मैदानी पंच अभि तळेकर घेताना दिसत आहेत. मिड ऑफच्या दिशेनं चेंडू टोलवला होता. चेंडू टोलवून दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक सरळ येते ती अर्थातच यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज आपलं उद्दिष्ट गाठतोय की नाही यावर खातरजमा ही होताना दिसते. तिसरे पंच या ठिकाणी खातरजमा करतायत व फलंदाज नाबाद असल्याचा निर्वाळा येतोय. म्हणजे 2 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी रवळनाथ नागेशी क्रिकेट संघाच्या खाती ह्या सोडल्या जात आहेत. फटका सुरेख होता. फटका टोलवता क्षणी दुसऱ्या धावेसाठी धाव या ठिकाणी घेण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर फेक यष्टीरक्षक दर्शन बांदेकरच्या दिशेने आणि संशयाचा फायदा हा निश्चितपणे फलंदाजला मिळतोय व क्रिकेटमध्ये बेनिफिट ऑफ डाऊट गोज टू बॅट्समन फेवर या उक्तीप्रमाणे फलंदाज नाबाद असल्याचा निर्वाळा. 2 महत्वपूर्ण धावा या ठिकाणी निघतायत ज्या दुहेरी धावेने 91 धावा धावफलकावर, म्हणजे अजूनही 3 धावांची गरज व 5 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. किरण गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. सुरेखरित्या चेंडू टोलवला जातो. चेंडूचा प्रवास होतोय तो डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. बघता बघता स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार चेंडू करतोय व अशा तऱ्हेनं तब्बल 4 चेंडूंचा अवधी शेष ठेवत या ठिकाणी विजयश्री प्राप्त करतोय तो रवळनाथ नागेशी क्रिकेट संघ. बहुधा उपउपांत्य फेरीमध्ये म्हणजे क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. तर श्री स्पोर्ट्स देवबाग क्रिकेट संघाचा प्रवास या स्पर्धेमध्ये इथेच थांबतोय. आजच्या सकाळच्या सत्रातील या ठिकाणी सामने हे संपतायत. दुपारच्या सत्रातील सामन्यांना सुरुवात होते. दुपारच्या सत्रातील सामना या ठिकाणी खेळवला जाईल. पहिला सामना